Hello guys, today I'm here with the basics of crochet and you can say C to T of crochet or A to Z of crochet. So guys, please listen to the video till the end, and sometimes I am going to speak in another language, so please omit those parts if you don't understand, because I am just repeating the same things in different languages. তো আজকে আমরা সবাই এখানে চলে এসেছি আমার লাভলি সোলস শ্রোতা বন্ধুরা ক্রোশিয়ার অর্থাৎ কুরুশের একদম ক থেকে শ পর্যন্ত অথবা ক থেকে বিসর্গ পর্যন্ত আপনাদের সামনে আমি কুরুশের সব কিছু নিয়ে চলে এসেছি. So guys, we have different type of crochet hooks. Those are in different sizes, and why these sizes are needed I'm going to tell you, because we have different size of crochet threads or yarns, you can say. This is the first thread and the thickest thread you can see. This is quite thick thread or yarn, you can say. This is also called shut-in macrame and all. So I have that yarn ball and I just wrap it around a simple log. I have made this. So for this type of yarn, or I have made this yarn from my t-shirt, I'll make another video of how to make a yarn out of t-shirt. I'm going to show you. And this another one is simple wool or simple yarn. A single thread is this thick, you can see. Then we have another thread or yarn. This is a bit thinner than this one. And then we have simple embroidery threads. It has 6 plies. I can show you. 6 plies. It has 6 plies. So this one, and simple swing machine thread. We have this one. তো বন্ধুরা, আমাদের কাছে বিভিন্ন রকমের ইয়ার্ন আছে, এখানে বিভিন্ন সাইজের ইয়ার্ন আছে. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मोटा सा यार्न है, इसे शट-इन मैक्रेम भी कहते हैं. यहाँ पे है हमारे पास यार्न या थ्रेड आप कह सकते हैं, जिसे मैंने अपने टी शर्ट से बनाया है. टी शर्ट काट के इसका भी वीडियो मैं बाद में दूंगी. और ये है सिंपल वूल और यार्न जो हम स्वेटर बुनने में काम लगाते हैं. और ये है उससे भी थोड़ा सा पतला. और ये है सिंपल एम्ब्रॉयडरी थ्रेड. এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন प्लेन एम्ब्रॉयडरी साधारण थ्रेड. एंड ये स्विंग मशीन का थ्रेड है, जिसे हम स्विंग मशीन में यूज़ करते हैं. सिंपल थ्रेड है. तो ये जो इतने सारे डिफरेंट थ्रेड है, इस डिफरेंट थ्रेड के लिए हमारे पास डिफरेंट हुक्स है. सो गाइस, वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ threads or yarns, and for this different size and kinds of yarn we are going to knit different type of crochet hook. So for the thickest yarn, this one and this one, we are going to use this thick crochet hook. You can see the number is 5 mm hook. This is 5 millimeter hook. তো এই 5 millimeter hook দিয়ে আমি এই দুটো yarn দিয়ে আমার যে কোনো কাজ করে থাকি. For this thread or this yarn, I'm going to use simple 3 mm or 3.5 mm hook. This one is for this yarn. This is a bit thinner, so I'm going to use this hook. This is actually 2 mm hook, but this was my first yarn hook, and I used to knit so tightly. I used to crocheting but tightly, and I broke this in two. But still,
have managed to make it again a single piece, and I'm still using this one. This is my very first crochet hook and I love this one. So this is basically for this kind of yarn. So I'll let you see. This one is the thread and I use this with this crochet hook. This crochet hook, 2mm hook, is suitable for this crochet. For the thread, embroidery thread or simple swing thread, we're going to use even tinier hook. This is 0.95 mm hook. This can be used for this crochet or the yellow yarn I have used. So we are going to use this hook for embroidery thread, or you can use this hook for the yellow yarn I have previously shown you. And this one too, you can use 0.95 mm hook with this thread or with this yarn too. Now if I want to use only 2 plies of this thread, then I am going to need a bit tinier hook that will be 0.5 mm or 0.6 mm hook. So these are the points of this hook are very teeny. It is almost like, if you see, it is almost like needle. So it will be used for this thread. So this is all about the different sizes of threads or yarns and different type of hooks that we are going to need. If you don't have any numbering for the crochet hook, that will be fine, because you can easily get a thick hook or a bigger hook for the bigger yarn. You can get a simple wool or yarn hook. You can ask for the yarn hook in any stationery shop or the shop you used to go usually, and these are called simple threading hook. Thread yarn, not actually wool yarn or any kind of thick yarn. It is used for threads, crochet threads. You can also get this as a crochet hook, thread hook. These are also thread hook. This is yarn hook and this is bigger hook, the biggest hook I'd say. তো বন্ধুরা, বিভিন্ন সাইজের আলাদা আলাদা থিকনেসের ওপরে বেস করে আমাদের কাছে বিভিন্ন রকমের হুক আছে। तो सबसे मोटी yarn के लिए, सबसे मोटे थ्रेड के लिए हम लोग सबसे बड़ा वाला ये साइज़ यूज़ करेंगे। ये 5 mm का हुक है, 5 मिलीमीटर का। ये तो सिंपल सा উল है या यार्न है। तो এইটার জন্য আমরা ব্যবহার করব सिंपल बाजारे जो किनते पावा जाए, बाज़ार में बहुत इजीली अवेलेबल है। आप कोई भी दुकान में जाके बोल सकते हैं कि ऊल बुनने के लिए जो हमें क्रोशिया हुक है वो चाहिए। तो দোকানে গিয়ে আপনারা सिंपली ऊल বোনার জন্য এই হুকটা পেতে পারেন। ये है थोड़ा पतला सा हुक ऊल। ये 3 प्लाई का होता है, ये 4 प्लाई का है, ये 3 प्लाई का है। सो गाइस, दिस इज़ 4 प्लाई wool and this is thread or yarn. This is 3 ply yarn. तो ply किसको कहा जाता है? What is ply? If you see inside, you can see 3 separate thread within this. So this is called 3 separate thread is actually making this wool or this yarn. So that is called 3 ply yarn. तो इसमें आपको 3 धागे देखने को मिलेगा, इसमें आपको 4 धागे देखने को मिलेगा। 4 धागे मिलाकर ये बन रहा है और 3 धागे मिलाकर ये बन रहा है। तो ये थोड़ी सी पतली ऊल है, तो इसके लिए हमको
ये वाला हुक चाहिए 2 मिलीमीटर का हुक चाहिए, लेकिन ये टूट गया है इसलिए मैं आपको नंबरिंग नहीं दिखा सकती। ये मेरा सबसे पहला हुक था और इसको मैं इतनी टाइट बुनती थी, इतनी टाइट क्रोशिया करती थी, जो ये हाफ हो गया। इसको फिर बाद में मैंने जोड़ा है कोशिश करके, लेकिन आज तक इसे मैं छोड़ नहीं पाई क्योंकि ये सबसे पुराना मेरी जर्नी में सबसे पहले साथी बना था, तो इसलिए इसको यहाँ पे ही रख देते हैं हम लोग। अब नया है आपका ये, दिस इज़ द 6 प्लाई एम्ब्रॉयडरी थ्रेड। तो एम्ब्रॉयडरी थ्रेड से भी बहुत कुछ बना सकते हैं, और ये है हमारा सिंपल थ्रेड। अब दोस्तों, नाउ वी आर गोइंग टू सी how the complete product will look like using this. I haven't used this yarn yet. I haven't made anything out of this type of yarn, and I didn't use it yet. But I have used this type of yarns, this and this. So I'm going to show you what I have made out of this yarns. So this cute guy here, this little cute octopus is here. You can see I've made this out of this yarn. So this big it will gonna be, this big if we use this 3mm hook, 3mm hook, and this yarn or this thread, this has came out like this big from this. So here it goes, and okay, he'll be crying if he'll be out of focus of this camera, so I'm putting it here. And out of this yarn I have made this cute little jelly baby baby jellyfish. So I've made this out of this one. And if we use 2 ply of this thread, then the work will turn out like this. You can see this is teeny hydrangea flower. I have made teeny hydrangea flowers. So I have made it out of this kind of thread and 2 ply of them, only 2 plies of them, and this has turned out like this teeny 4 petals flower or 5 petal flowers. তো বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যখন আমি এমব্রয়ডারি থ্রেড দিয়ে কোনো কিছু কাজ করছি, তো তার মাত্র 2টো সুতো আমি নিয়েছি, 2টো প্লাই আমি নিয়েছি, এবং তার দ্বারা এত সুন্দর একটা জিনিস তৈরি হয়ে গেছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ছোট ছোট ফুল, 4টে পাপড়ির অথবা 5টা পাপড়ির ছোট ছোট ফুল আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, খুব সুন্দর তৈরি হয়েছে। So guys, to make this I have used 0.5 mm hook. Sorry, I have used 0.95 mm hook. Now, if we use this simple threading swing thread or simple thread, then the work will turn out like this. And for this I have used 0.5 mm hook, this one. It can poke you easily. This is very sharp like a needle. So this is called micro crocheting. You have already seen in my previous video I have uploaded for micro crocheting. And the yellow yarn you have remembered, that is called crochet thread. I have made this embellishment or you can say crochet jewelry, little earring. You can use this as a earring. So I've made it out of that yellow yarn. Means the thickness of that yarn is similar to that yellow yarn or yellow thread
that is called crocheting thread. So this is all about the size of the hooks and the yarn, different size of yarns, different kind of yarns. So this is all for today. Stay tuned for the next video. Till then, bye bye.